हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अब जो हमने शुरू करना है टॉपिक इसके अंदर वो है कंट्रोलिंग। ठीक है बेटा, कंट्रोलिंग वैसे तो बेसिकली इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बट बेटा इट इज नॉट लास्ट फंक्शन एक्चुअली, because we know that management is a continuous process. So after controlling beta, again the next process again start from the after controlling is planning is also automatically starts. But beta this chapter, this function of the management beta is a very important function. ठीक है, तो इसके अंदर बेटा है क्या? नॉर्मली कंट्रोलिंग measures the or ensuring that activities or in an organizations are performed as per plan. बेटा जो प्लानिंग करी थी और जो एक्टिविटीज हैं, the activities are performed as per the planning or not. This is what the controlling is. ठीक है, so there are some features of controlling, which is beta we know that controlling is a goal oriented function. ठीक है, then beta it is a pervasive function, then beta it is considered to be forward and backward looking. ठीक है बेटा, एक तो गोल ओरिएंटेड है, pervasive function है बेटा, and controlling is always looking backward and forward. ठीक है, देन बेटा इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो ये है, इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट ब्रिंग द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन, बिकॉज वी नो दैट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. सो दिस इज नॉट अ लास्ट फंक्शन बेटा, इट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन. ठीक है, तो बेटा दीज आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. तो बेटा वी नो दैट देर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल द बेटा फंक्शंस द all the function having the same objectives which is to be goal oriented. ठीक है, all the functions are helping the organization to achieve their goals, whether beta it is the planning, whether it is organizing beta, whether it is the staffing or whether it is directing. ठीक है, because beta management working as a process and in that process beta all the functions are used one by one. ठीक है जी. So next beta importance of controlling. Mainly beta it helps the business manager to judge the objectivity and accuracy of the standard. ठीक है, तो बेटा इसके अंदर द मैनेजर्स टू जज द ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड. ठीक है, सेकंड वन बेटा इट सीक्स टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, ये सारा कुछ बेटा बेस कहां पे मिलेगा? प्लानिंग के अंदर. और कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली देखना ही क्या होता है बेटा कि द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एक्चुअली रियलिटी एज पर द प्लानिंग और नॉट. ठीक है, सो इट सीक्स टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट सीक्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉई एंड हेल्प्स देम टू गिविंग अ बेटर परफॉर्मेंस. ठीक है, तो बेटा टाइम टू टाइम क्या होता है वहां पर जो टॉप लेवल्स है बेटा या मिडिल लेवल के लोग हैं बेटा, वो टाइम टू टाइम दे जस्ट मेक द कंपैरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है, तो उससे क्या होगा बेटा, उनकी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा और बेटा विद इंक्रीज इन द एफिशिएंसी लेवल तो बेटा देयर परफॉर्मेंस इज आल्सो इंक्रीज. ठीक है, विच अगेन बेटा मोटिवेट द एम्प्लॉइज. ठीक है, और विद द मोटिवेटिंग ऑफ एम्प्लॉइज बेटा देयर एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव, दे यूज द फिक्स्ड सोर्सेज प्रॉपरली विच रिजल्ट्स इन द बेटर एज प्रीवियस वन. तो बेटा better results means profitability increase. If the profitability increase beta, there may be possibility of growth and expansion of the organization as well as the employees.
So this is what the controlling is. So beta, what are the various steps of controlling process? Again the beta controlling process is the important thing. ठीक है? How this controlling process is working? So what are the main steps beta? Setting performance standards clear. Beta, these standards are performed on the basis of past experience. ठीक है? So the very first thing is the setting performance standards clear. What the work should be done in a day, in 8 hours. This is what the standard is in all working conditions. ठीक है? And these standards are to be maintained on the basis of beta past experiences. Then measurement actual performance as far as possible. After beta making standards, then in the next step beta measures the actual performance as far as possible. ठीक है? Then beta comparing the actual performance with the standard. Standards are fixed in the first step, actual performance measured in the second step, but in the third step comparing the actual performance with the standard. ठीक है? And after that beta find deviation. If beta they found any deviation, differences if any, then taking corrective action whenever the deviations occurs beyond the limit. ठीक है? अगर बेटा they found deviation beyond the limit, then बेटा taking corrective actions. This is what the planning process is. Say they planned for the, एक एग्जाम्पल लेके बेटा इसको अगर हम क्लियर करें, उन्होंने क्या करा मैनेजमेंट ने ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एक एवरेज ली. उस एवरेज के अंदर कि जस्ट एक एम्प्लॉय अगर 8 आवर दिन में वर्क करता है बेटा, ही कैन प्रोड्यूस 200 यूनिट्स. दिस इज द स्टैंडर्ड इन ऑल कंडीशंस. ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. बट बेटा जब उन्होंने एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करी, then that employee beta on an average produce 180 units, whereas the standard is for 200 units. Then beta actual performance is 150 and standard is 200. Then beta that standard or actual performance compare and they find the deviation of 50 units. And beta after getting deviation, beta they have to take the corrective action to improve that deviations. ठीक है जी? तो बेटा दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग प्रोसेस इज. एंड बेटा द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. बेटा वी नो दैट प्लानिंग इज अ very first function of the management and controlling is the beta last function of the management. So these both the functions are beta interrelated, interdependent. अगर बेटा किसी का ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी की प्लानिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बेटा, कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम है, गोल्स कांट बी अचीव. ये बेटा प्लानिंग के अंदर प्रॉब्लम है बट कंट्रोलिंग प्रोसेस इज अ वेरी स्ट्रांग, देन अगेन बेटा गोल्स नॉट बी अचीव. ठीक है? सो हाउ दीज बोथ द फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड. वी नो दैट बेटा प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, बट वी नो दैट ऑल्सो कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग बोथ. सो हाउ दीज functions are interrelated. So the very first one is a planning without controlling is useless. Planning without controlling is useless. And controlling without planning is blind. ठीक है जी? क्लियर है बेटा? ये planning without controlling is useless and controlling without planning is blind. So both are beta important function of the management. Then planning provides the basis of controlling. बेटा प्लानिंग ने क्या दिया? बेस दिया कंट्रोलिंग को by setting standard और objectives, standards और budgets. In the absence of standard, manager will not know what activity have controlled. If standards are not there, then beta manager has no option to compare the actual performance. ठीक है? And the standards which are given by the planning only. Then planning and controlling are interrelated beta and interdependent.
सो बोथ द फंक्शंस आर बेटा इंटर रिलेटेड, ठीक है जी। इनका बेटा इंडिविजुअली कोई रोल नहीं है, दे आर बोथ आर इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट, ठीक है, दे बेटा गो साइड बाय साइड, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, share and subscribe my channel if you like my these lectures, and thank you very much for watching my lectures.